अस्सलाम वालेकुम, खुश हमदीद माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब सेट होगा, अगर नहीं तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यार अभी हम जा रहे हैं अरमाल शरीफ मेला देखने के लिए। नाम तो आपने सुना होगा कि अरमाल शरीफ मेला लगता है, काफ़ी बड़ी बड़ी दूर से लोग जो है आते हैं देखने के लिए। तो अभी हम दोस्त जो है उधर जा रहे हैं मेले पे देखने के लिए। तो चलते हैं फिर यार, बाकी प्लान जो है रास्ते में। और जी उमर भाई अभी बोले भाजी बड़ा ज़्यादा रश है, देख सकते हो तुम यहाँ पे। चिड़ियाँ नहीं हैं चिड़ियाँ बहुत भी ਅਸੀਂ बैठे ਵੇਖ ਤੇ ਚਾਰ ਆ पर्ची दे ये भी बना ला के वो पर्ची ये बनती है पर्ची लिखो जी जनाब। ठीक है ठीक लिखा एक सह नहीं मारदा 16 सानू ही पता लगे ना की लिखे है। ਉੱਥੇ 10 ਲਾਉਣਾ 100 ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ किन्ना है 125 45 है 100। अच्छा 100 ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਣਾ। हाँ जी जनाब, मेले उत्ते असीं पहुंच गए हैं जनाब। आज मेले विच मेले होणगे। हाँ जी कैसा वाइड एंगल मार रहा है। गेम है विचों ही लैके जाना नाल लग गया तो टच हो गया तो समझ लो। Say
be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. उमरा मार चल रहा हूँ सही गल है एंड ना हुआ था उमर भाई क्या हो गया एंड हो गया का ग्लास जो है ना 20 रुपए देते जाओ फिर जग ठंडा ठंडा पीते जाओ ग्लास 20 रुपए का पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है अगे भी आज भरा जी They'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. तो हाँ जी यार सीन कुछ ऐसा हुआ है कि बाकी दोस्तों का जो प्लान बन गया है हमने देखनी है सर्कस। तो सर्कस का शो शुरू होना था 1 बजे, तो 1 बजे शुरू होना है, वो तकरीबन ख़त्म होना है जाके 3 या 4 बजे, सारी टाइम ख़त्म होना है। तो हमने सुबह काम पे भी जाना होता है, तो सुबह शायद मैं सामान लेने भी जाऊँ, तो अगर 3-4 बजे जब वहाँ पर शो देख के सारी टाइम 4-5 बजे घर आएंगे तो सोएंगे किस टाइम। तो इसलिए मैं आ गई हूँ, रिश्ते वाले को 60 रुपये किराया दिया, सीधा मानो चक। तो आपने देख लिया मेले की वीडियो वगैरह सीन कैसा है, तो फिर बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।